Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एवं मु प्लस थ्री सीबीसीएस फिजिक्स ऑनर्स जीई आ एमएससी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक करदेव और चैनल को सब्सक्राइब करदेव यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल रे सेट करदेव तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें गैमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके ए विषय रे पढिबा अल्फा डीके रो हमें बेसिक्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लास रे देखिला सो गैमो थ्योरी पाई हमें केतरा बेसिक एजम्पशंस नबा फर्स्ट हला एन अल्फा पार्टिकल मे एग्जिस्ट एज एन एंटाइटी विदिन द हेवी न्यूक्लियस भितरे ये रहिबो अल्फा पार्टिकल टा तापरे कहूची अल्फा पार्टिकल इज इन कांस्टेंट मोशन एंड हेल्ड इन द न्यूक्लियस बाय द पोटेंशियल बैरियर ओके सो एठी हमें क्वांटम मैकेनिकल कांसेप्ट को इंट्रोड्यूस करिबा by applying the potential barrier okay then third point रे कहूची there is a definite probability that alpha particle may tunnel माने ये लीक करिवो through this potential barrier which is nothing but the nucleus right so for this purpose let us now consider the Coulomb potential barrier which is having a rectangular shape okay and you can see here in the figure this one so देखो एठी ए पोटेंशियल बैरियर रेक्टेंगुलर शेप अछि आउ सपोज हमें कहला स्मॉल a हे गला एठी हमरो विड्थ ओके सो विड्थ ए बैरियर पई हमें नै गला स्मॉल a राइट ए बैरियर रो हाइट हमें नै जिबा व्हिच इज v इक्वल टू v0 ओके नाउ सपोज हमें कहला अल्फा पार्टिकल गोटे इंसिडेंट होची ऑन दिस बैरियर a direction ru right which is having some energy E less than the barrier height which is v0 okay such that we can classify this barrier into three regions okay such that the potential V is equal to 0 in the region 1 which is having x less than 0 okay this is region 1 तापरे region 2 जो थरे की barrier height टा v0 ही जाउची for 0 less than equal to x less than equal to a आउ region 3 ही गला x greater than a this one which is having potential v equal to 0 now we apply the one dimensional Schrodinger equation h for which we have d square psi by dx square plus 2m by h एठी h क्रॉस हबो ओके एठी प्रिंटिंग मिस्टेक अछि 2m by h क्रॉस स्क्वायर into e minus v psi equal to 0 now after this हमें कोन करबा एठी एक्चुअली psi माने एठी हमें वेव फंक्शन को नउचु अल्फा पार्टिकल जो मूव करछि ओके सो फर्स्ट हमें गोटे गोटे रीजन करके आको देखिबा फर्स्ट रीजन 1 रे हमें देखिला जे पोटेंशियल वैल्यू v इक्वल टू 0 ताकू पुट करबा सपोज एठी वेव फंक्शन हबो एठी भी टिके प्रिंटिंग मिस्टेक अछि psi 1 हबो ओके so wave function को हमें region 1 by psi 1 धरला so this is our Schrodinger equation suppose 2me by h cross square को हमें निकला k1 square okay ताले यार गोटे जनरल सॉल्यूशन हमें बाहर करि परिबा psi 1 equal to a e to the power I k1 x plus b e to the power minus I k1 x okay where a and b are arbitrary constant तापरे देखिबा एबे सेकंड region 2 which is having v equal to v0 and e is less than v0 ताले region 2 पाई हमरो वेव फंक्शन गला psi 2 ताले जेहेतु e होची less than v0 सो हम एको उल्टे दबा माइनस सिंबल एठी पळे आसिला ओके सो याको हमें सिंपलीफाई कर दबा विथ k2 स्क्वायर such that k2 is this much ओके तो एबे यारो जदि हमें सॉल्यूशन काढिबा एबे एटा एक्सपोनेंशियल रे आसीबो बिकॉज़ माइनस अछि ओके एठी देखो माइनस अछि सो एक्सपोनेंशियल रे आसिला psi 2 equal to c e to the power minus k2x plus d e to the power
plus k2x. c out d again higla arbitrary constant. Now finally for the region 3 again having the potential v equal to 0. So Schrodinger equation jemti ame upare region 1 pai dekutila sei hisab re hi asibo. So this is suppose having a constant k3. Okay, so that k3 ର value ହେଲା ଏତିକି which is equal to k1. Okay, because same ରହୁଛି region 1 ସହିତ ୟାର ବି general solution same format ରେ ଆସିବ. Okay, କିନ୍ତୁ ଆମେ arbitrary constant ଅଲଗା ଅଲଗା ନେବା, right? So f e to the power I k1x plus g e to the power I minus I k1x. Okay, তাহলে এটি গোটে জিনিস মার্ক কর রিজন 3 রে এই যে সেকেন্ড পার্ট এটা দেখাউছি e to the power minus ଅଛି, so it is representing some wave which is moving along minus x direction. Okay, কিন্তু minus x direction को move को wave করিব যদি সেটা রিফ্লেক্ট হইতব, since there is no reflected wave in this case, so region 3 ପାଇଁ এটি ଆମକୁ g equal to 0 ହିଁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ. therefore এটি wave function টা ଏବେ ଆଉ ଟିକେ simplify ହେଇଗଲା f e to the power I k1 x. Okay, so ଆମର next task ହେଲା ଯେତେ ସବୁ constant ଆମେ ନେଲା arbitrary constant ତାର value ଏବେ determine କରିବା. So in order to determine the values of these constant जोटा ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି a b c d f, we apply the boundary conditions. This is very important. So boundary condition कौन कहूची at x equal to 0 first condition कहला psi1 equal to psi2 which is equal to 0. तापर second condition जदि हमें differentiate करूचु first order रे d psi1 by dx will be equal to d psi2 by dx at x equal to 0. Okay, boundary एठी माने कोन बुझबा दुईटा ही पोजीशन अछि, गोटे x equal to 0 आ गोटे x equal to a. So ए प्रथम दुई कंडीशन तो x equal to 0 को बुझेला, तापर थर्ड कंडीशन at x equal to a psi3 equal to psi2 आओ d psi2 by dx equal to d psi3 by dx at x equal to a. Okay, तो ये चारिटा हमर कंडीशन आसिला. सो प्रथम कंडीशन जदि हमें अप्लाई करूछु तार रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करिबा ताले a plus b equal to c plus d हबो. तापरे नेक्स्ट कंडीशन जदि हमें अप्लाई करी कि तार वैल्यू पुट करला. ओके, देखो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमें पुट कर देला. तापरे एट x equal to 0 देइची, सो एठी सब x मान करे हमें 0 बसेबा. याकू टिके सॉल्व करिबा. देखो a minus b रो वैल्यू हमरो ए हिसाब रे सिंपलीफाई हे गला. ओके, तापरे next boundary condition which is at x equal to a psi2 equal to psi3, again we put the value. Okay, एठी किंतु equal to 0 देनी, एटा टिके मने रखिबो. ओके, केवल फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन at x equal to 0 रे ही psi1 which is equal to psi2 which is equal to your 0. Okay, so that tomorrow easily condition टा देखो ऊपर आसी जाउतला a plus b equal to c plus d, किंतु एई जगह रे एई केस रे एम्ति हबो नाही. Okay, because of the tunneling factor. So जहाँ भी हो फोर्थ बाउंड्री कंडीशन आछी जोटा कि कहूची d psi2 by dx equal to d psi3 by dx at x equal to a. रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमें अगेन एठी पुट कर देला. ओके, तापरे आकु बढ़िबा एई वैल्यू पुट करला परे हमें याकु टिके सिंपलीफाई भी करि परिबा. ओके, एई जाय पहुंचला. एबे एई इक्वेशन को इक्वेशन 2.40 सहित ऐड कर देबा. ओके, and we try to simplify it by writing the value of d along the LHS so that d रो value एतिकी आसीबो. तापरे एई इक्वेशन 2.41 जो अछि we subtract this equation from 2.40. ओके, 2.40 कोटा ए जो ऊपर हमें पाइथिला. ओके, जोटा हमर थर्ड बाउंड्री कंडीशन थिला, थोरे ऐड कला थोरे हमें सब्ट्रैक्ट करिबा सो दैट हमें c इक्वल टू पाइगला गोटे यार वैल्यू एतिकी. एबे कोन करिबा ए जो d और c वैल्यू पाइला याकू एबे हमें प्लस करिबा c plus d. ओके, काहे कि एमती करूछु बिकॉज़ हमें ऊपर पाइछु a plus b equal to c plus d. सो c plus d रो वैल्यू पाइला परे रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट करिबा, सिंपलीफाई टी करिबार अछि. तापरे पुनी हमें सब्ट्रैक्ट करिबा c minus d बाहर करिबा. ओके, तार वैल्यू भी ए हिसाब रे हमें किछि पाइ गला. नाउ एबे हमें रेडी यार वैल्यू पुट करिबा पई, सो दैट एबे देखो दुईटा कांस्टेंट हमें ओमिट करि परिबा. a plus b equal to c plus d थिला, एतिक हमें लिखि देला. a minus b रो भी अकॉर्डिंगली हमें एतिक वैल्यू टे पाइथिला, ताकू भी लिखि देला और टिके सिंपलीफाई कर देला. राइट, अच्छा ना एबे
आमे बी को उड़ेबा को चेष्टा करिबा केमती ए प्लस बी और ए माइनस बी अछि सो प्लस कर देले आमे प्लस माइनस बी कटि जिवो ए रो वैल्यू हिसाब रे आसीबो ओके आ यदि सब्ट्रैक्ट करछु ताले हमरो बी रो वैल्यू एतिकी आसी जिवो ओके अच्छा नाउ द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ए पार्ट को एबे आसीबा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट माने कोन it is defined as the ratio of the transmission probability density current to the incident probability density current or mathematically याको हमें symbol use करिबा t which is equal to v3 psi t star by v1 psi in star okay एथिरे v1 और v3 कोन एटा होची रीजन 1 और 3 रे रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज ओके आउ इटी v1 मस्ट बी इक्वल टू v3 हबो तापरे साइ इन एटा तो होची इनकमिंग पाई ओके आउ साइ t होची एटा जो ट्रांसमिटेड टा ओके व्हिच इज f e to the power I k1 x ओके इनकमिंग टा थिला एतिकी आउ ट्रांसमिटेड टा हला फाइनल ट्रांसमिटेड एतिकी ओके सो ये वैल्यू को अभी आम जब पुट करवा देख v3 और v1 कटिजो ये ताले f स्टार बाय ए स्टार हो गला हमर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट रो वैल्यू ओके सो दैट एबे इक्वेशन 2.48 जो ऊपर आमे पाइथिला ए इक्वेशन रो ए रो वैल्यू आमे पुट करवा ओके सो आफ्टर पुटिंग वी आर गेटिंग द ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट लाइक दिस एबे आमे यूज करवा cos h square k2a which must be equal to 1 plus sin h square k2a এটা hyperbolic function जो trigonometric रे एथरो आछि so याको यूज करिकि again we try to simplify for the value of t now we put the values of k1 and k2 जोटा हमें नहीं थिला रिप्लेस करथिला जोटा ओके k1 और k2 रो वैल्यू को आम एठी पुट करवा ताले एठी एटा तळे जेहेतु अछि दैट मीन्स याकू ए टोटल डिनोमिनेटर तार टू द पावर -1 ए हिसाब रे लिखि परिबा ओके देन सिंस k2a is greater than 1 therefore sin square k2a will be equal to 1 by 4 e to the power 2 k2a ओके ए जिनसटा को एबे हमें यूज करबा putting this value in equation 2.52 देखो ए हिसाब रे हमर आसिला सो इक्वेशन जो 2.52 हमर थिला ए जगह रे हमें एक्सपोनेंशियल हिसाब रे याको लिखिला ओके सो एटा गोटे प्रॉपर्टी जदी एंगल जो साइन रो ग्रेटर देन 1 थिबो ए हिसाब रे हमें लिखि परिबा नाउ नेग्लेक्टिंग दिस 1 फ्रॉम द आरएचएस ए जो 1 प्लस समथिंग अछि बिकॉज़ ए क्वांटिटी बहुत लार्ज क्वांटिटी सो हमें नेग्लेक्ट करि परिबा 1 को ताले हमरो आरएचएस टा नियरली इक्वल टू दिस मच हला एबे याको एबे सिंपलीफाई करिबा अछि टू द पावर -1 थिला सो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को हमें उल्टे दबा आ एठी e टू द पावर प्लस अछि एटा माइनस ही जिवो ओके सो एबे सिंपलीफाई है कि हमरो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमें पाई गला व्हिच इज सेम एज द प्रोबेबिलिटी फॉर डीके पर यूनिट टाइम दैट इज लैम्बडा सो लैम्बडा हिसाब रे भी हमें याको लिखि परिबा सो बोथ साइड रे एबे log to the power base e पर ln जदि नहीं गला ताले हिसाब रे हमरो वैल्यूटा आछि ओके आउ हम स्टार्टिंग रे कहूछु एनर्जी इज लेस देन v0 so e by v0 can also be neglected as compared to 1 ताले ए इक्वेशन एबे आउ टिके सिंपलीफाई हमें याको कर दे परिबा देखो ए जगह रे हमरो क्वांटिटी एतिकी आसिला ओके हम एठी e by v0 को नेग्लेक्ट कर देला ओके फर्दर आ टिके सिंप्लिफिकेशन करिवार अछि log बेस लैम्बडा को ए हिसाब रे हमें लिखिबा देखो राइट फर्दर सिंप्लिफिकेशन रे नाउ सिंस v0 does not remain constant but it changes with r according to the coulomb's law ओके हमें जानि छु coulomb's law हिसाब रे एटा r सहित चेंज करिवो तार वैल्यूटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहउची सो ए इक्वेशन जो ऊपर हमें पाउछु याकू एक्चुअली हमें इंटीग्रेशन लगे कि लिखा को पड़ो ओके सो एठी ए जो टर्म टा रहिला ए टर्म रे जो हमरो dr माने विथ रेस्पेक्ट टू r हमें इंटीग्रेट कर देबा लिमिट लगेबा r0 टू r1 एंड दिस इक्वेशन विल गिव यू द रिलेशन बिटवीन द decay constant and the kinetic energy of the alpha particle
and this theory will give a finite probability of transmission or tunneling the barrier, and it explains the emission of alpha particles of lower energy than the energy of the potential barrier. Now one more thing, ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇ ଗ୍ୟାମୋ ଥିଓରିର ଜେନେରାଲ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ୍ ଥିଓରି ଦେଖିପାରିବା, ଫର୍ ୱିଚ୍ we will consider the case of uranium 238. Okay, so ଏଇ uranium 238 ରୁ suppose ଆମେ ଗୋଟେ alpha particle ବାହାର କରୁଛୁ, then it can come out from this nucleus କେତେବେଳେ possible if its energy is more than 35.6 MeV. But however experimentally କ'ଣ ଦେଖାଗଲା kinetic energy alpha particle जो uranium 238 ରୁ ବାହାରୁଛି it is about 4 MeV. So according to the classical theory alpha particle cannot escape from the nucleus classical point of view ରୁ, that means classical theory ଏଇ alpha decay କୁ explain କରିବା ପାଇଁ fail ହେଲା. On the other hand ଯଦି ଆମେ quantum mechanics apply କରୁଛୁ, then Gamow had shown that there is a finite probability for the alpha particle which is possessing an energy less than the potential barrier height, okay, to penetrate the potential barrier and thereby escape from the nucleus. So Gamow ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ assumption ନେଲେ ସେ କହିଲେ, ଯେମିତି ଆମେ previous ବି ଦେଖୁଥିଲା, alpha particle is preformed inside the parent nucleus. Parent nucleus ରେ ଆଗରୁ ଅଛି alpha particle ଟା. Second point ରେ alpha particle is in constant motion and bounces back and forth from the barrier walls, and during each collision with the wall of the potential barrier there is a definite probability of leakage through the barrier. Okay, so ଏଇ ଯୋଉ probability କଥା ଆସୁଛି, suppose ଆମେ କହିଲା capital P ହେଉଛି probability of transmission of alpha particle in each collision, and we take nu to be the frequency with which the alpha particle collides with the walls in order to escape from the nucleus. Now decay probability per unit time जोटा कि आमे कहबा disintegration constant lambda याकु लेखि परिबा as the product of nu and p, and if there is only one alpha particle in the nucleus which moves back and forth along the nuclear diameter, then nu equal to v by 2r0. एटी v हेगला velocity of alpha particle आउ r0 हेगला the nuclear radius. ताले यार value अबे put कर देले lambda value accordingly एती के आसीगला. Okay, now you see the following figure 10, okay, where it is representing qualitatively the approximate formation of the potential energy of the alpha particle as a function of its distance from the nucleus. Okay, so एठी देखो energy को हमें y axis रे नीचू, r को हमें x axis रे नीचू. So the potential that exists around the nucleus is known as the potential wall. Okay, एई figure रे तमे देखिବାକୁ पाउछो OA एटा नेगेटिव रे आसुची which is equal to minus v0. It is the potential energy of the alpha particle when it is inside the nucleus. Now we have CD एटा positive रे आसुची, okay, which is equal to your VC, this one. Okay, यार माने कोन, this is the electrostatic potential energy of the alpha particle when it is just outside the range of the nucleus. Now जदि हमें total energy को नहीं गला E, okay, let E be the total energy of the alpha particle which is obviously less than this VC, and the particle is initially outside the nucleus, then it is unable to enter the nucleus. जदि particle टा आरंभ रे ही nucleus रे बाहर अछि ताले nucleus भीतर को आउ enter ही करि परिबो नाही, because तारो energy nucleus रो potential जो electrostatic potential energy रू कम अछि. Okay, so it will be repelled back away from the nucleus because आमे जानिछु alpha particle रो energy alpha particle रो charge होची positive और nucleus रो charge मध्य positive. Okay, so repel हेकी पळेला, किंतु जदि आमे कहूछु जे particle टा already nucleus भितरे अछि, then it is also unable to escape from the nucleus. काहेकि because it will be pulled back into the nucleus. Okay,
तेबे एटा क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू रो क्वांटम मेकानिकली कोन होची अ मूविंग पार्टिकल इज ट्रीटेड एज ए वेव एटा तुम जानिछो जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस वेव पार्टिकल डुअलिटी रो सो देयर इज ए डेफिनाइट probability to leak through this potential barrier which is known as the tunneling effect. Okay, and the alpha particle has a finite probability of being able to cross this potential hill as shown in the figure जोटा आमे या पूर्व देखुला. ओके सो एई हिसाब रे देखो अल्फा पार्टिकल रो मोशन को आमे गोटे वेव हिसाब रे ट्रीट कला एटा लीक करिकि बा टनल करिकि बाहर को पळे आछी. ओके सो एबे क्वांटम मेकानिक्स अप्लाई करिकि आमे केमती यार थ्योरी को तैयारी करिबा. For this purpose we need to use the WKB approximation method. Okay, so that the probability P can be calculated by using the formula log base E of P which is equal to minus 2 by h cross integration r0 to r1 then the square root of 2m v minus E of tr. Okay, एठी m हेगला mass of the particle, h cross already जानिछो एटा होची h by 2 pi और एठी vr होची जो potential electrostatic potential which is 2z e square by 4 pi epsilon 0 r. Okay, so it is the electrostatic potential as I said of the alpha particle at a distance r from the nucleus which is having a charge plus ze. Now the charge on the alpha particle, as you know, it is a doubly charged helium nucleus, so it is plus 2e. Okay, ताले एबे यार वैल्यू को जदी हमें ऊपर पुट करिबा ताले log base EP रो वैल्यू अकॉर्डिंगली एति की आसी गला. नाउ एट r इक्वल टू r1 ऊपर फिगर देखिबा r इक्वल टू r1 माने ए पोजीशन रे. ओके ए पोजीशन रे कोन होउची देखो एति की जाय सीधा आसिला तापरे अगेन बाहरला बेल को गुणी वेव हिसाब रे बाहरुची. राइट, so at r equal to r1 we have the energy nothing but the total energy which is 2z e square by 4 pi epsilon 0 r1. ओके एटा तुमरो जो टोटल एनर्जी रा ताले याकू एबे हमें लिखि परिबा log base e of p देखो एज इट इज रहिला एठी किंतु एई जगह रे तुमरो जो 2z e square by 4 pi epsilon 0 r थिला. ओके आमे कोन कला तळे ऊपर r1 मल्टीप्लाई कर देला सो दैट आमे एठी e पाई गला सो e r1 by r. एबे आमे इजीली 2m e स्क्वायर रूट को बाहर को आनी आसी परिबा. ओके ताले भितरे एबे क्वांटिटी रहि गला इंटीग्रेशन r0 to r1 कहारो r1 by r minus 1 रो स्क्वायर रूट. ओके सो याकू जदी ए इंटीग्रेशन को सॉल्व करिबा को हमकू पडुची ताले आमे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करि परिबा. we take r to be equal to r1 cos square theta and r0 to be equal to r1 cos square theta 0. ओके ताले एठी एई मेथड को हमें यूज करी कि फर्दर हमें बाहर करि परिबा dr रो वैल्यू. ओके dr रो वैल्यू अकॉर्डिंगली एति के आसी गला. राइट, आउ हमरो इंटीग्रेशन रे एबे जदी हमें पुट करूछु ताले देखो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन. ओके सो लिमिट एबे r0 और r1 जोड़ा थिला एटा हि जो एबे थीटा 0 आउ थीटा. राइट, सो एई सब वैल्यू एबे हमें पुट करिला पोरे फर्दर याकू इंटीग्रेट करिबा ताले एबे सिंप्लिफिकेशन आड को जदी हमें जिबा ताले देखो एठी तमे देखियो को पाउछो फाइनली आसुची r1 into theta 0 minus sin theta 0 cos theta 0. Okay, and here cos square theta 0 is r0 by r1 hence theta 0 is equal to cos inverse of square root of r0 by r1. Similarly sin theta 0 is equal to 1 minus cos square theta जोटा कि एठी हमें लिखि परछु 1 minus r0 by r1 यार स्क्वायर रूट. ओके सो याकू एबे हमें अप्लाई करी कि देखो ई सब लिखि परला. नाउ इक्वेशन 7 और 8 जोटा अछि 7 थिला log base e of p पई एबे इक्वेशन 8 रे जहा वैल्यू हमें पाइला ताकू एबे पुट कर दबा ई जगह रे. ओके बिकॉज़ द पोटेंशियल बैरियर is relatively wide so we can take r to be greater than r0, hence we can take the cos inverse r0 by r1 yarrow square root to be nearly equal to 90 degree minus square root of r0 by r1. Okay, so similarly 1 minus r0 by r1 रो square root को nearly 1 नहीं परिबा.
ओके कहीं एमती है बिकज बेरियर जो अच्छी पोटेंशियल बेरियर इट इज रिलेटिवली वाइड ओके सो याकू एबे ई इक्वेशन 9 रे सब्स्टिट्यूट करबा परे फर्दर सिंप्लिफिकेशन ओके फर्दर सिंप्लिफिकेशन एंड नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ r1 ओके जोटा आसीबो एई हिसाब रे बिकज e इक्वल टू 2z e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 r1 थिला ताकू एबे पुट कर दबा ओके देन देखो एठी पुणी आमे अराइव करूछु इक्वेशन 10 रे नाउ वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज of various constants in this equation 10 ओके सबू जेते कांस्टेंट गुडार वैल्यू सपोज जेमती हला e हला केते 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम h क्रॉस which is h by 2 pi h रो वैल्यू सिमिलरली तमे प्लैंक्स कांस्टेंट रो वैल्यू पुट करि परिबो z रो वैल्यू पुट करि परिबो m रो वैल्यू पुट करि परिबो ओके इप्सिलॉन 0 ए सबू वैल्यू पुट करला परे किंतु z जेहेतु एठे हमें सर्टेन नुह ओके तार एटॉमिक नंबर को न्यूक्लियस रु बाहर सपोज आम जेड को एज इट इज लिखिदेबा ओके आउ r0 भी एज इट इज थाउ ता छड़ा e को भी एज इट इज लिखिदेबा बाकी सब जो कांस्टेंट वैल्यू को आम तार वैल्यू पुट करबा सो log base e of p will be found out to be equal to 2.97 z to the power half r0 to the power half minus 3.95 z e to the power minus half okay एटी E हेगला काइनेटिक एनर्जी which is measured in mega electron volt r0 the nuclear radius which is measured in Fermi where Fermi is equal to what 10 to the power minus 15 meter और z जेमती कहली it is the atomic number of the nucleus minus the alpha particle this is very important nucleus रो जहाँ atomic number थिला minus alpha particle कला परे एटा होची z okay then the decay constant जार वैल्यू आमे पाउथला lambda equal to nu p और v by 2r0 p ताले log base e of lambda हे जिवो एतिकी और log base e lambda यार वैल्यू देखो एठी log base e p आमे पाई जे सरिचु तार वैल्यू को आमे एठी पुट कर देला ओके and this equation 12 represents the alpha decay when the base log base e is changed to base 10 माने एटी 2.3026 रो फैक्टर हमें इंट्रोड्यूस करबा को पड़िबो ताले अकॉर्डिंगली log base 10 lambda रो वैल्यू आसी जिवो this much okay which is similar to the equation that is 12 केवल डिफरेंस हला एटी log base e थिला एटी log base 10 अछि okay so this is all about the Gamow theory of alpha decay Thank you.